friends, welcome to my channel Decoding English with Dr. Manpreet. Today we are going to study a story, A Cup of Tea by Katherine Mansfield. Let's have a brief introduction about the author. Katherine Mansfield was a modernist writer. She was born on 14th October 1888, died on 9th January 1923. She was a great storyteller and she is best known for her collection Dove's Nest and Bliss and Other Stories. She was friends with D.H. Lawrence, Virginia Woolf and the Bloomsbury Group. At 34 years of age, she was detected with pulmonary tuberculosis and she breathed her last. Now, when we look at her stories, we find that these stories are written in a very simple manner, but they have a deeper meaning and they have deeper themes. Now, this story, A Cup of Tea, portrays the class distinction, materialism, insecurity, women's jealousy and hollowness of the upper class society of that time. In this story, we have three main characters. Rosemary Fell, who was a very rich lady. Then we have Philip Fell, that is husband of Rosemary. And the third character is Miss Smith, who is the beggar. Now, when the story starts, it's written in a very simple manner. And when the story starts, we are introduced to the main character Rosemary Fell. सबसे पहले जब कहानी शुरू होती है तो Rosemary Fell जो है first character, we are introduced to that character, and this story is a kind of psychological story which is written by Katherine Mansfield. और इस story में सबसे पहले Rosemary Fell को introduce किया जाता है, जिसमें Rosemary Fell जो है she is a very rich lady, बहुत अमीर lady है. And though she is not very good looking, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, पर बहुत ज़्यादा rich है, बहुत ज़्यादा smart है और बहुत ज़्यादा शौकीन है. She is a frantic reader. She loves to read books. बहुत किताबों की शौकीन है और बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती है. ख़ास तौर से फ्योडोर डॉस्टोवेस्की की बुक्स पढ़ती है और जिससे जो उसको शिक्षा मिलती है, वो जो आइडियलिज्म है उस सब को वो ग्रास्प करती है और लाइफ में दिखाने की उसको लाइफ में अप्लाई करने की वो कोशिश करती है. नाउ इन दिस स्टोरी इट इज़ अ विंटर आफ्टरनून और वो किसी एंटीक शॉप पे गई है कर्जन रोड पे, जहाँ की वो एक एंटीक शॉप में जाके शॉपिंग करना चाहती है. बिकॉज फिलिप her husband loves her, so he doesn't have any problem and they are very rich, so इसलिए वो टाइम पास करने के लिए अक्सर ही शॉपिंग पे जाया करती है. और इसी तरह से जब वो शॉप में एंटर करती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी शॉप है और जैसे भी वो एंटर करती है तो जो शॉपकीपर है he is also a good salesman and he says that he has reserved one blue colored velvet box for her. एक बॉक्स उसने रखा है, ज्वेलरी बॉक्स कह सकते हैं, और वो उसको दिखाता है. इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड शी फाइंड्स इट्स रियली ब्यूटिफुल. लेकिन जितना प्राइस वो बताता है वो कुछ ज़्यादा उसको महंगा लगता है. दो शी इज़ अ वेरी रिच लेडी, स्टिल शी फाइंड्स दैट द प्राइस ऑफ द बॉक्स इज़ टू हैवी and she tells him to reserve the box and she'll purchase it little later. ये कहकर वो दुकान से बाहर आ जाती है कि उस बॉक्स को वो बाद में खरीदेगी. और जब वो बाहर आती है and she is about to enter her car, though it is raining a bit outside, and she finds Miss Smith there. She's a poor girl. She is begging and she is asking, pleading that lady Rosemary to give her the price of a cup of tea. वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और वो उससे पैसे मांगती है कि एक कप चाय वो पीना चाहती है. सारी की सारी वो भीगी हुई है and that lady Miss Smith is young
and thin, and she has a little dark complexion. उसको देखकर रोजमेरी को बहुत ज्यादा उस पर तरस आता है, एंड शी इज रिमाइंडेड ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द बुक्स शी हैज बीन रीडिंग. जो किताबें अब तक वो पढ़ती आई है, जो आइडियलिज्म वो पढ़ती आई है और जो वो चाहती है कि लाइफ में हो, तो वो सोचती है कि इस लेडी को वो घर ले जाएगी और उसको वो चाय भी पिलाएगी और उसका वो ठीक से उसकी खातिरदारी करेगी और मे भी कुछ परमानेंट इसका कोई उसका कुछ इलाज करेगी या उसको अपने पास ही रख लेगी. सो थिंकिंग ऑल दिस शी ऑफर्स मिस स्मिथ टू कम अलोंग होम, एंड मिस स्मिथ इज सरप्राइज्ड. शी स्टार्टल्ड, ओ माय गॉड, एंड शी थिंक्स कि जरूर कुछ गड़बड़ है, ये मुझे कहीं पुलिस स्टेशन ना ले जाए, एंड शी इज रियली अफ्रेड ऑफ द लेडी. बट मिस रोजमेरी फेल, शी टेल्स हर, शी एश्योर्स हर कि शी रियली वांट्स टू हेल्प हर, और वो उसको अपने साथ अपने घर ले जाती है. घर ले जाकर शी हरसेल्फ टेक्स हर टू द बेडरूम और उसको वो कंफर्टेबल करती है. शी गिव्स हर क्लोथ्स टू चेंज, शी गिव्स हर हॉट tea, and she gives her some sandwiches and some other snacks. And Miss Smith, she is such a poor girl and she hasn't had things to eat. पता नहीं कितने दिनों से उसने खाया नहीं था, and she eats frantically, and she just sips hot tea. और जैसे ही उसका कप खाली होता है, रोजमेरी उसका कप फिर से भरती जाती है, and she feels really happy, she feels really good to help her and to feed her. And by that time Philip, her husband, comes back and she introduces मिस स्मिथ टू फिलिप. उसको वो इंट्रोड्यूस करवाती है और फिलिप को बताती है. लाइब्रेरी में वो दोनों जाते हैं एंड दे सिट एंड हैव अ ब्रीफ टॉक, एंड शी टेल्स फिलिप दैट मिस स्मिथ इज गोइंग टू स्टे. वो बताती है कि वो वहाँ पे मिस स्मिथ जो है वहीं पे वो स्टे करेगी. दो फिलिप्स डजंट लाइक दिस, ही डजंट लाइक दिस आइडिया, क्योंकि ही हैज हिज ओन एप्रीहेंशंस. ही फील्स कि पता नहीं कहाँ से आई है, कैसी लेडी है, शी माइट बी अ बेगर और शी माइट बी अ थीफ, कुछ नहीं पता है. सो लेकिन रोजमेरी वो सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है और ना ही वो कुछ भी सुनना चाहती है. एंड देन फिलिप अंडरस्टैंड्स दैट हाउ ही कैन ही स्टार्ट्स telling her that isn't Miss Smith beautiful? He says she's actually amazingly beautiful. I didn't look at her first, but you just see, she's actually really beautiful. And then he asks her politely that is she going to stay with us till dinner? And then Philip goes away for a while. And Rosemary is filled with jealousy from inside. She feels that Philip is giving attention to Miss Smith more than her, and she feels jealous from inside. She feels a rival, and she just rushes to her room and she gets some money for Miss Smith. She just gives her money and she disposes her off and she lets her go away. उसको वो कुछ पैसे देकर वहां से भेज देती है, क्योंकि उसको लगता है कि फिलिप जो है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और रोजमेरी जो है शी विल बी निग्लेक्टेड. सो इस तरह से रोजमेरी गेट्स रिड ऑफ द beggar girl just like that. And now when we look at the story, it's a very simple story, but then towards the end, just see the end, how then Rosemary gets dressed up, she puts on makeup, she gets dressed up, and then again she goes to the library and she sits on Philip's knees and she asks him that whether she can buy that velvet box at that antique shop. Actually बात कुछ और है, मन में उसके कुछ और चल रहा है. And then she says that I'm sorry that Miss Smith had to go, उसको कुछ काम था और वो वहां से चली गई है. और एंड में then she asks in a very humble and a very polite and a very sweet tone that Philip, am I pretty? So that shows the end of the story. These are the ending lines of the story which shows the women's jealousy.
Now, this is the basic trait which Catherine Mansfield has pointed out in the story, along with the class struggle or the class consciousness. जो उस time पर चल रही थी class consciousness, the poor and the rich, that also is shown in the story, along with the materialism. हालांकि कितने रिच हैं दोनों, रोजमेरी फेल एंड फिलिप फेल, still they are materialistic, they are buying that velvet boxes, and still they don't have money to nurture that poor lady. And then the jealousy and the hollowness, जो उसके मन में एक सोशल सर्विस और एक काम करने की या हेल्प करने की भावना आई थी रोजमेरी के मन में, वो जैसे ही वो जेलसी की भावना उसके अंदर आई, वो हेल्प वाली जो फीलिंग थी, दैट जस्ट रशेस अवे, दैट जस्ट गोज अवे, दैट शोज द हॉलोनेस of the ideal things which he has been thinking about. That was just a hollow ideas, वो अंदर से उसके अंदर वो चीज नहीं थी. Actually she was just posing to be idealistic, and सही मायने में देखा जाए तो वो अंदर से बहुत ही खोखलापन था, क्योंकि वो सिर्फ एक दिखावा ही था. She just wanted to show her friends and boast that she has been helping a lady. So these are the major themes in the story when we read the story. So I hope the theme and the story is clear to all of you. Thank you so much.